मटीरियल्स के साथ। मेरा फोन, आप मंदिर जाएंगे चप्पल उतार के, जब वापस आए तो चप्पल ही चप्पल लिया तो ये नहीं कोई भी चप्पल पहन के चले, मेरी वाली कहाँ है, तो मेरा कहाँ था, तो मेरे में योग है, मेरी वाली में योग है। तो जितने भी आपके आसपास पूरी फैमिली खराबी थी, आपको एग्जैक्टली इस तरह की चीजें फील हो रही होती है, आपको क्या मेरा मन बड़ा खराब हो गया। हाँ भाई, ऑडिटोरियम में उदासी का मतलब खुशी अंदर से, साहस, शक्ति, इधर से भी लगता है, इधर से उत्साह, शक्ति को प्याते हैं और आनंद की होती। जैसे 7 रंग होते हैं जो के, उनको मिलाकर के आप बहुत सारे कलर्स सेकेंडरी टर्शियरी जनरेट कर सकते हैं। ऐसे आत्मा की ये इनके बारे में दिक्कत अच्छी लग रही है, इसमें नहीं ऊपर वाला इसमें तो सही है। एक लाइन याद कर सकते हैं, या साइड जाओगे ना, इस साइड। पंकज पांडे का लो है ब्लड प्रेशर, पांडे जी कहते नहीं, सॉरी, ये आत्मा की 7 मूल क्वालिटीज हैं। सिग्नल ना रे बड़ी आपको प्यास कब लगती है? मैं ढंग से कनेक्ट ना करियो। प्यास कब लगती है? जब पानी की पीछे वाली देखो, कमी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कमी। कमी का मतलब पानी है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो जितना उस लेवल तक लाने के लिए आप उतना ही पानी पिएंगे। अगर आपको 1 गिलास पानी की कमी, क्योंकि योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो पानी है ऑलरेडी, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं, थोड़ा यूज हो गया, कमी हो गई, तो जितनी कमी हुई है उतना ही पानी प्यास लगती है। 1 गिलास की कमी है तो आप 1 जग नहीं पिएंगे। तो जरूरत उसी चीज की होती है जो पहले से आपके पास है, उसमें कमी आई है। अगर आप में है ही नहीं वो चीज, तो आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी और आप कभी उस चीज में नहीं। अभी सर्दियों में हम सब ने वुलन्स पहने हैं, क्यों? क्योंकि शरीर अग्नि तत्व का बना है, लेकिन ये अग्नि तत्व सर्दियों में बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसलिए उसको रोकथाम करने के लिए हम लोग ये वुलन्स पहनते हैं। ज्यादा भी हो जाए तो अग्नि तत्व तो भी हम पंखे चलाएंगे कि भैया वापस से उसको लेवल में लाओ। तो क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो पहले से ही हमारे अंदर है। सुख की कमी क्यों महसूस होती है? क्योंकि सुख पहले से ही हमारे अंदर है। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर पहले से वापस आते हैं योग पर। पहला प्रकार का योग था हमारा पार्टनर्स के साथ। हमारा जब दूसरी आत्माओं के साथ एनर्जी एक्सचेंज होता है, योग होता है, उस रिलेशन को कहते हैं, उसको कहते हैं रिलेशन। जो पहले वाला योग था उसको कहते हैं भौतिकवाद, मटीरियलिज्म। दूसरे प्रकार का योग जो आत्माओं के साथ है, उस योग को कहते हैं संबंध। उस योग में क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज। कभी आपके दोस्त की बहुत अंदर से लोग है, आपने उसको फोन किया, मिले, थोड़ा अच्छी बातें बताई, थोड़ा उसको शक्ति दी, तो वो नॉर्मल हो जाता है। कभी उनका भी होगा, आप लोग फील करते हैं तो आपका फ्रेंड आपको बोलेगा, अरे जी तुम मुझे इतना अच्छा समझ रहे थे, अभी तुमको क्या हो गया, याद करो वो दिन, तो आपको भी वापस से आपके अंदर भी एनर्जी आ जाती है। उतनी ही एनर्जी आप कर पाते हैं जितनी आपके पास है, जितना मेरे पास है उतना ही मैं दे पाऊंगी। तो इसमें ना गेन है ना लॉस है, बस एक्सचेंज है। सारा दिन हम इन 2 प्रकार के योग में ही रह रहे हैं, या तो भौतिकता या तो एनर्जी गेन कॉन्शियस योग में होगा। इसीलिए जब लोगों ने ये समझ लिया कि इस प्रकार के भौतिकवाद में एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो कई लोगों ने अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए कह दिया कि योग का मतलब तभी है जब आप भौतिकता छोड़ दीजिए। और आज दिन तक ये मिथ चला आ रहा है कि आप तभी खुश रह सकते हैं जब आप ये छोड़ दें, इच्छाएं छोड़ दें। हाँ, इच्छा छोड़नी है, लेकिन कौन सी इच्छा छोड़नी है वो भी समझना है। इसीलिए कई लोगों ने संन्यास ले लिया। शांति तभी मिलेगी जब हम ये सब छोड़ देंगे। योग तभी कर सकते हैं जब ये सब कुछ, तभी आज अगर हम किसी को कहें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि योग को पूरा समझा नहीं है। अगर आप छोड़ भी दें, वंस एंड फॉर ऑल छोड़ भी देते हैं बाई चांस, तो क्या
छोड़ने से गेन हो रही है एनर्जी, अरेस्ट हो रही है कि इससे ज्यादा अब और लॉस नहीं होगा, डिप्लीट नहीं होगी, लेकिन गेन तो नहीं हो रही, के बावजूद भी आपका नेट पॉजिटिव है। अब वो एनर्जी गेन करने के लिए किसी ऐसे से कनेक्ट होना पड़ेगा जो सदा एनर्जी में बहुत ज्यादा है। वो कौन? परमात्मा। उसके साथ योग वो है तीसरे लेवल का योग, और उस योग को कहा जाता है राजयोग। राजयोग, राज इज अ एडजेक्टिव ऑल्सो, जिस चीज के साथ लग जाए उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है। सब पथ में से राजपथ, सब गद्दियों में से राजगद्दी, सब तिलक में राज तिलक, सारे भोजन में से राजभोग, तो सब योग में राजयोग। तो एक एडजेक्टिव भी है और राज एक वर्ग भी है। राज का एक अर्थ ये भी होता है कि राज करो, राज करना। तो ये राजयोग क्या है? जैसे हम सभी ने ये सिखाया कि शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जिसको आत्मा कहा जाता है, वही महसूस कर रही है। उसके निकल जाने के बाद एक 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 करके सारी करने के लिए ठंडी हो जाती है, शांत हो जाती है, शांत हो जाती है। अब कुछ इसमें हलचल नहीं होगी, कुछ नया नहीं कर सकते। जितना मोमेंटम आत्मा जाने से पहले देके गई थी, जैसे पंखे का आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ के बाद ही पंखा थोड़ा थोड़ा तो चलता रहता है ना, लेकिन उसको और नई एनर्जी मिलती गई, तो जितनी एनर्जी उसके पास आ चुकी थी मोमेंटम उतना वो यूज कर लेता है, अपना बन गया। ऐसे शरीर भी एकदम से आत्मा जो सब कुछ बंद नहीं, जितनी एनर्जी आत्मा अपनी देके गई थी उतनी यूज कर लेता है, फिर उसके बाद प्रत्याख्यान। तो इस शरीर का और आत्मा का संबंध ऐसा ही है जैसे कि आपकी गाड़ी और ड्राइवर। ठीक है मैं करवाती हूँ, ठीक है। गाड़ी है, गाड़ी को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बोल देती हूँ। लेकिन गाड़ी नहीं है, जितनी भी इम्पोर्टेंट गाड़ी क्यों ना हो, हाँ किसी की बहुत अच्छी गाड़ी BMW क्रैश हो गई, वो बच गया, तो लोग क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं, आप तो बच गए। तसल्ली किस बात की होती है? ड्राइवर तो बच गया। तो हमारी गाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप शरीर नहीं है। आप कौन है? ड्राइवर। किसकी है ज्यादा, किसका बचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो तो अजर अमर अविनाशी, उसे कुछ होगा नहीं, लेकिन हम ये जानते नहीं है। पूरी जिंदगी डर में रहते हैं, कुछ होना चाहे, कुछ होना चाहे, कुछ होना चाहे, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि मैं विनाशी गाड़ी हुई नहीं, मैं अविनाशी, अजर अमर अविनाशी ड्राइवर हूँ। तो आज तो हम ये ड्राइवर गाड़ी शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द तो इंग्लिश भाषा के बहुत बाद में, हिंदी भी बहुत परिवर्तन होने के बाद है। जिस समय आध्यात्मिकता में सारे ग्रंथ पुराण लिखे जा रहे थे, उस समय पे गाड़ी ऑफिस का उस समय क्या चलते थे? ठंड लग रही है। रथ चलते थे, घोड़ा गाड़ी चलती थी, लोग पैदल चलते थे। तो उस समय पर शरीर को उपमा दी गई रथ थी, और रथ को चलाने वाला कौन होता है? वो मतलब उठा रहे हैं सारथी उसको कहते हैं कि आपकी गाड़ी है, लेकिन आप खुद नहीं चला रहे, आप पीछे बैठे हैं, आपने एक ड्राइवर हायर किया हुआ है जो आपकी गाड़ी चला रहा है। तो आपकी गाड़ी है, आप रथी है, लेकिन आप चला नहीं रहे, तो सहरथी वो है सारथी, पर आपकी गाड़ी ड्राइवर है, कोई और भी है क्या? नहीं, आप अकेले हैं ना, आप ही चला रहे हैं और आपकी ही गाड़ी है। तो उस सिचुएशन में आप हुए रथी, जो शरीर है रथ, आप आत्मा है रथी। ड्राइवर कहाँ बैठेगा? मतलब जिसको भी गाड़ी चलानी है वो कहाँ बैठेगा? हमेशा गाड़ी की फ्रंट सीट पर, क्योंकि सारे कंट्रोल्स वहाँ हैं। इस पूरे शरीर की गाड़ी में सारे कंट्रोल्स कहाँ है? ऐसे ब्लेम कर रहा है बहुत ज्यादा। आप कैसे बैठे हैं, अपने बॉडी पोस्चर को अनुभव करें।
सारे मसल्स रिलैक्स करनी होगी। सांस की गति भी बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ भाई, अब क्या लॉन्च होना है इसको? अब जैसे ये शरीर इस कुर्सी पर बैठा है, ऐसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा बैठी है। ये शरीर की यही है ये? एक क्या था इसमें, उसको करना था सेलेक्ट, और इसके अंदर मस्तक के बीच में जिसको रिकॉर्डिंग ना स्ट्रीमिंग। हाँ तो स्विमिंग एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। केबल लगाऊं, केबल लगाऊं। यार मेरे स्पीच कब होगा, मेरे मन में भी चल रहा था यार मेरा कार्यक्रम कैसे होगा, और अगर मैं लिमिट करना नहीं आपकी वो मेरे आ भाई गई। जैसे हम पढ़ते हैं ना मेटाफिजिक्स, ये मेटा एनाटॉमी और मेटाफिजिक्स, और यही कारण है कि मैं और बड़े भाई साहब रूप सिंह जी कभी भी मौका नहीं छोड़ते यहाँ आके उस एनर्जी को गेन करने का। हर बुधवार सुबह हमारी क्लास 1 घंटे की यही होती है। ये जो अपॉर्चुनिटी मिली हमने आज सुबह भी और कल सुबह भी यहाँ अपनी क्लासेस अटेंड करी है, क्योंकि हम यहाँ के नियमित स्टूडेंट हैं। और जैसा दीदी जी ने बताया कि सभी जगह सेंटर्स हैं, आसपास में हम खोलेंगे तो एकदम मिल जाएंगे। कर सकते हैं प्लीज। तो ये एनर्जी हम कहीं भी गेन कर सकते हैं। बस सबसे बड़ी चीज ये है, दीदी जी ने कहा कि हमें अंदर झांक के उसको जगाने का प्रयास शुरू करना है, और जैसे ही प्रयास शुरू करते हैं स्वतः ही रास्ते निकलते चले आते हैं। और जो यहाँ भाई बहन आए हैं उनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है कि आज इस सेशन को अटेंड किया। सुबह दीदी से निवेदन किया था हमने कि कम से कम हमें 1 घंटे का तो क्लास कराएं, कल हम नहीं समय मैनेज कर पाए थे, तो दीदी से बात हुई कि कल की तो सॉरी हुई, लेकिन आज जरूर कराएं। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। आशा दीदी जी का भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रेसिडेंट दोनों से निवेदन करूंगा वो दीदी का सम्मान करने के लिए स्टेज पर आए। डॉक्टर मंजू राठी हो तो वो भी स्टेज पर आए, अगर वो नहीं है तो मिसेस प्रियंका सिंह, मेरी योगर, ममता जी, मीनाक्षी। शर्त यही है कि जो जो स्टेज पे आ रहा है वो अपने यहाँ जाके सेंटर पर क्लास करने लगेगा। आपने मेरी दूसरी लाइन सुनी क्या? तो दौड़ कहेंगे तो ठंडी कम लगेगी ममता जी मीनाक्षी जी। दीदी देखने में आप नहीं जाना, हमारे पूरे युवा प्रभाग की तनाव मुक्ति की इंचार्ज है। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने भी इनसे कई बार योग के बारे में पूछा और वार्तालाप किया है। ये बहनें ब्राजील में भी और रसिया में भी योग सिखाती हैं, और ऐसी एक बहन ने 8,000 से ज्यादा। थैंक यू। आज भी 3 मई से कार्यक्रम, काफी बड़ा कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में है, और आज सुबह ही सूचना मिली है कि 13 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया भारतवर्ष की, उनके यहाँ पूरी एक इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जा रही है 13 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ। 13 तारीख का प्रोग्राम प्रेसिडेंट ज्ञान भवन में भी तरह इस तरह की बहुत सारी वर्कशॉप हमारी हो रही है रेगुलर, दिल्ली में, गुड़गांव में और आसपास। बस ये है कि हमें अपने आप को तैयार करके एक रिक्वेस्ट करनी होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस योग सेशन के बाद बैक साइंटिफिक एकेडमिक सेशन अपनी जो हमने पढ़ी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पास वापस। I'd like to welcome Dr. Praveen Gupta ji. Dr. Praveen Gupta, he is a renowned neurologist with over 20 years of experience, currently serving as chairman of the Maringo Asia International Institute of Neuro and Spine Program, a gold medalist from AIIMS, New Delhi. He is known for pioneering advanced neurological treatments in stroke, epilepsy, movement disorders,
and multiple sclerosis, and is widely recognized for his leadership, innovation, and excellence in neurology. He has been featured in Forbes India as one of the most influential healthcare leaders. हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अजय गोयल जी, डॉक्टर गोयल आपको प्लान में देके स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से दीदी जब रति का फोर फ्रंट बता रही थी तो न्यूरोलॉजी सुन लेंगे, अरे तो मेरा काम था। मैं जिस ब्रोकास्ट सेंटर को टच करता हूँ वहीं से हिलने लगता है। अब इधर आ जाता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम डॉक्टर जी। डॉक्टर पेशेंट कहाँ है? ये फैन ऑफ यू। तो मैं चाहूंगा कि आप प्योर न्यूरोलॉजी ना पढ़ाएं, न्यूरोलॉजी विद स्पिरिचुअलिटी पढ़ाएं। डॉक्टर पेशेंट आप इधर ही फ्रंट पे आ जाएं। हमारे डॉक्टर गर्ग साहब आप यहाँ आ जाएं। डॉक्टर सुनील चौक सर मॉडरेट कर लें सेशन को, वीआईपी मीटिंग से हो जाएगी बैठने के लिए। बेटा सर आप सामने आ जाएं, भविष्य सामने आ जाएं, और सारे श्रोता भी अगर सामने देखेंगे तो थोड़ा सा ग्रुप रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये दिक्कत है ना, तो इस लाइन में चलेगा डॉक्टर साहब का। ठीक है सर, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। ओके ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम ने जब बताया कि कौन से कोऑर्डिनेट में आत्मा होती है, वहां पर एक्चुअली एनाटॉमिकली पीनियल ग्लैंड होता है। मैं डॉक्टर राजेश सर बैठा था, यही डिस्कस कर रहा था कि उस पीनियल ग्लैंड के आसपास ही आत्मा होती है, और हमारा ब्रेन में एग्जैक्टली 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और 1 क्वाड्रिलियन सिनेप्सेस होते हैं, जिनको कोऑर्डिनेट करने से ये सारा गेम जो दुनिया चल रही है और हम चला रहे हैं उनसे चलता है। तो जब हम इतना बड़ा गेम चलाते हैं तो सर में दर्द होता है, जिसे हम बोलते हैं हेडेक, जिसके ऊपर ये टॉपिक है। इसका टाइटल है गैस वाला हेडेक, क्योंकि अधिकतर पेशेंट जो आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे सर में गैस चल रही है और गैस की वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, बट द ट्रूथ इज कि हेडेक की वजह से गैस होती है। तो दैट्स द होल आइडिया। कितने लोगों को हेडेक होता है? वी कॉल हेडेक कहानी गैजेट की बिकॉज 1 in 4 हाउसहोल्ड्स हैज at least one person with headache. But the tragedy is कि nobody teaches headache in MBBS nor in MD और DM for neurology में कोई हेडेक के बारे में एक वर्ड नहीं पढ़ाता। सारे लोग हेडेक जब वो प्रैक्टिस करते हैं तब सीखते हैं और तब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सारे मरीज जो आते हैं उनमें से आधे मरीज फिजिशियन के पास जो आते हैं वो हेडेक के ही होते हैं और वो हमें हेडेक देते हैं। हेडेक की तो जो होल स्टोरी फॉर अ ओपीडी फिजिशियन or a physician is to differentiate between the usual headaches and the migraines, and that is what it is all about. You are invited to participate during the lecture. Standard OPD story: young lady comes 30-year-old कि मेरे सर में 6 महीने से डेली दर्द है, टेंशन से बढ़ता है, चिड़चिड़ापन है, थकान है, पूरे सर में है, बेचैनी है और कुछ अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले मैडम ने भी इसे चालू किया था, क्योंकि हमारे जीवन की स्टैंडर्ड स्टोरी आज की वीक में। So what is the diagnosis? Stress, depression. What do you prove? Because this is what she feels and this is most important to her. But if you do not ask questions, she will not tell you the answers. So that tells me a story. When I came to Haryana and started practicing first, a Mataji came to me and she said, मैंने पूछा माताजी बीमारी क्या है? तो माताजी said, बीमारी तू बताएगा कि मैं बताऊंगी, पैसे तूने लिए मेरे लिए।
So I asked her, माता जी कहाँ तुम्हारी ये तो बता दे. She said, तू बता, पहले तूने लिए. तो मैं I asked her कि माता जी पेट में दर्द है. माता जी said, अगर पेट में दर्द तो सर वाले डॉक्टर के पास आके इतनी बेवकूफ थोड़ी ना. That is how we come to know. The problem is that most people think that headache on hunger, travel, not sleeping, stress is a normal phenomenon. But headache, any pain cannot be a normal phenomenon. If there is pain in body, it is a sign of abnormality. That is why the core thing in treatment of any neurological disease and most importantly headache is history. So take proper history. Case number 2. A 60-year-old lady comes to you with history of intermittent headaches, severe for last 6 months, improves with analgesic, with photophobia, with numbness in head and difficulty in concentrating, and with MRI head which is normal. Actually, most of the time neurology starts when the MRI is normal. Otherwise, MRI report डालके तो ChatGPT से कोई भी आंसर बता सकता है. So, what do you think is the diagnosis? And what question do we ask, and what is the most important test that you do when the MRI is normal, 6 months history of it? Take home point, elderly people can get migraine. But elderly people will not tell you the history of their younger days unless you ask for it, whether you had migraine or not. And the simplest and the most least bottom test, ESR and CRP, is the most important test in a 60-year-old person, because that single test can tell you the important diagnosis of temporal arteritis, which is a organ-threatening disease which can cause somebody to become blind and which will not get better with normal medication, responds only to steroids, and fundus examination, which will rule out raised intracranial pressure. In raised intracranial pressure, MRI can be completely normal. Coming to the next question, everybody has heard it multiple times. 30-year-old lady again comes with 2 episodes of headaches in last month, which is unilateral, throbbing, accompanied by vomiting and improved by sleep. What do you think is the diagnosis? How many people think it is migraine? Raise your hands, please. Migraine. जिसने हाथ नहीं उठाया वो बताओ what is the other diagnosis? So the International Headache Society says that a person should have 5 headaches of the above type to diagnose somebody migraine. With short history, never label a patient known case of migraine, because once you do it, everybody stops applying their mind. Everybody writes known case of migraine and starts treating. Why? Because this can be subarachnoid hemorrhage. It can be a colloid cyst, which is just above the pineal gland. It can be pachymeningitis without fever. So which means these are life-threatening conditions. If you label somebody migraine too early, within first month of occurrence, you can miss critical diagnosis. So that is why migraine is a chronic disorder. Don't label any acute history of migraine ever, you will miss many diagnoses. Now, a 30-year-old gentleman comes to you with history of multiple episodes of headaches over 10 years, with nausea, with photophobia lasting for 1 hour. What do you think is the diagnosis now? 10-year history, chronic history, multiple episodes. How many people think it is migraine? Once again, people who did not lift their hand are correct. It is not migraine. What question do you ask and what test will you do? Because migraine is not a short-lasting headache. Anybody who has headache less than 4 hours does not have migraine. Migraine headache happens from 4 to 72 hours. This headache is cluster headache. Cluster headache is more common in men by 8:1 ratio. Migraine is more common in women by 3:1 ratio, or it can be multiple idiopathic short-lasting headache. You know, even intercourse can cause this type of headache, which is known as intercourse-induced headache. There is a headache that can cause by eating ice cream. It is called ice cream-induced headache.
Even gym exercise, if you had heard it, can cause headache. That is exercise-induced headache. So a 30-year-old gentleman presents with 2 episodes of unilateral headache with nausea with photophobia, lasting for 10 hours preceded by blurring of vision. What do you think is the diagnosis? These histories you have all seen, heard multiple times in your practice before. But what is the diagnosis of this gentleman? 2 headaches over many months, 10 hours, transient blurring of vision. What do you think is the diagnosis? Can it be migraine? No, 2 episodes. 2 episodes. Okay. That is the trick. When you have typical aura, and aura is a very important characteristic of migraine, even 2 headaches will qualify as migraine with aura, and you have classical aura. And we will come back to it later. But if you have any focal finding, like vision disturbance, physical sensory disturbance, weakness, it is always better to do MRI. You can find the occipital lobe neurosis sarcosis in such a patient, causing blurring of vision and headache. Another lady comes to you, young lady with history of unilateral occipital headache, with pain starting in neck, rising to head, then spreading to the arm, with numbness and paresthesia. What do you think is the diagnosis? What? Yes, so she comes to you with a cervical spine X-ray that shows cervical spondylitis. Diagnosis is confirmed. Will you get an MRI done? Yes. Okay. Now let's come to the next thing. See, migraine does not happen only in the front. Migraine can happen in the back also. Any person whose headache in the occipital region is triggered by travel, sunlight, lack of sleep has migraine and not cervicogenic headache. Any person can have spondylitis on neck X-ray. That presence on X-ray does not mean anything at all. Unless there is stiffness of neck and difficulty in moving neck, you cannot have a cervicogenic headache. A 30-year-old lady comes to you with visual blurring which is transient as she changes her position. Associated with severe headaches for last 3 months, 5 to 7 episodes with nausea. What is the diagnosis? Anybody? Is it migraine? Vascular compression. It is a compression, but not a vascular compression, some other compression. What is the most important test? And what is the diagnosis? This is classical history of benign intercalate hypertension, what is called as pseudotumor cerebri. When you change your position, there is compression on the optic nerve. The compression of optic nerve because of raised pressure causes visual blurring. It is known as transient visual obscuration, classical sign of benign intercalate hypertension, which has become more common in recent times in young females because of hormonal disturbances. So, paramount importance is that MRI can be normal in pseudotumor cerebri, and fundus examination is the single most important test, least expensive, single most important test in differential diagnosis of headache. So all patients of headache should have their fundus examined without fail. And you must know that in DM exam of neurology, if a doctor has not seen the fundus, he is paid without asking any single other question. A 45-year-old gentleman presents with transient blurring of vision with complete inability to see for 20 minutes. He had same episode 3 days back in office. Diagnosis is TIA. How many people agree? Raise your hands. So very readily, the physician ordered a MRI and MR angiogram which shows 30% ICS stenosis. Now is the diagnosis confirmed? No. Okay, very good. See, it could be migraine aura. You can have aura in migraine without having migraine. It is called aura sans migraine. And how does the aura differ from TIA? I will show you in the next few slides. Very standard thing, a 50-year-old lady comes to your emergency with 6 months history of headache,
with vomiting when she is brought to ER. Her BP is 150 by 100. She has 5 other papers. Every time her BP is elevated. What is the diagnosis? Does she have hypertension-related headache? What is the diagnosis labeled? Yes or no? Hypertension-related or no? Good. See, we must know that any pain in the body will cause hypertension. If somebody has raised blood pressure during presence of pain, that is not hypertension. You have to take interictal BP to label anything as hypertensive. Ictal BP has no value. So last case, what you already present with 1 year history of headache with stress in family, with sadness, crying and withdrawn behavior, and starts crying in OPD while narrating history. Very common, right? You must know that 30% people who have migraine have clinical depression. Because of chronic pain and suffering, 30% people with migraine will land up with clinical depression also, and you have to look for it when you are treating migraine. So how do you diagnose migraine? Diagnosis depends only on history, and there are no examination findings or MRI finding characteristic of migraine. That is why this history taking is most important. The pointers for migraine are family history of migraine, age of onset less than 45 years, presence of aura and menstrual association. So migraine can be migraine with aura or without aura. Aura is like bright dots, flashing of light or zigzag lines. So the diagnostic criteria of migraine can be remembered by sultans. First criteria, severe unilateral throbbing. Activity worsens headache. At least 2 criteria should be met. Second criteria, nausea or sensitivity to light or sound. At least 1 should be met. If you meet this criteria and exclude other causes, you can make the diagnosis of migraine based on the other criteria I told just now. But the problem is during migraine, you can have vertigo, you can have pressure pain, pulsating temple, difficulty in thinking, concentrating, neck pain, dizziness, cold hands, sweating. So you can have innumerable symptoms in the body during migraine which can mislead you. The primary purpose of examination in a person with headache is rule out secondary headaches. Few people have it, but their condition can be life-threatening if you miss a secondary cause of headache. That is why all patients with headache, you must examine fundus and pupil, eye movements, meningeal signs and planters. Because all that hurts in head is not just migraine, it can be meningitis, case-occupying lesions, ophthalmic causes and primary headache disorders. So what are the red flags in diagnosis of migraine? If this is present, make a diagnosis with great care. Systemic symptoms like fever, weight loss. Neurological signs or symptoms like paresthesias, weakness, seizures. Sudden onset. Older age more than 50 years. No prior history of headache, acute headache. And secondary illness like HIV and cancer. Never make a diagnosis of migraine in a patient of cancer without excluding metastasis. How many people have migraine? Almost 98% people who have headache have actually migraine. So how does migraine happen? Migraine starts deep in the brain. It is an electrical neurological disorder. That is why pain is felt deep inside the head and it impacts the neurological functioning. There is a chemical inflammation and blood vessel dilation of the temporal artery. That is why people point here at the site of external temporal artery in all cases. And the inflammation irritates the trigeminal nerve, resulting in severe and throbbing pain. CGRP is the most important mediator of these headaches. That is why most new therapies are focusing on CGRP. Now this is aura. The difference between TIA and migraine aura is TIA is sudden. It's like this. It goes away like this. Migraine aura is slow. It starts like a curtain of a film. It actually covers the field slowly and then lifts off slowly. So migraine aura is gradual, TIA is sudden, and you can make the diagnosis clinically because migraine aura is caused by cortical spreading
depression. That is how it looks like. How many people think if somebody has history of 1 year of headache, an MRI is necessary? If you did not do the MRI, you can be sued in the court. How many people think that if I, as a neurologist, somebody came to me with headache, suggestive of migraine, and I did not order a MRI, I am liable to medico-legal problem? Raise your hands. Now, what is the data? This is the data, it will save you. When you do MRI or CT in a person with chronic headache more than 1 year, only 0.4% cases you change the diagnosis. Which means in most people with headache, chronic headache, MRI is likely to be normal without any contributing lesion. In any headache, only 2% of MRIs are abnormal in chronic headache. So even if you don't do imaging in chronic headache initially, you are medico-legally not liable, you are safe. In 30% people, doing imaging reduces the patient's anxiety and helps with symptoms. Now lastly, coming to treatment of migraine. It is 3 parts: effective treatment of acute attack, prevention and addressing comorbidities. So acute treatment of migraine contains oral tablets, nasal spray or injections. They should be easy to take and fast acting. So we have multiple things available like nasal sprays. We have sumatriptan nasal spray, zolmitriptan nasal spray in our country. Sumatriptan injections are now available and DHT injections are also available for severe headaches. We have multiple triptans available, which include sumatriptan, zolmitriptan, lisatriptan and elmotriptan in our market. Triptans are very good and effective migraine medication, but they have these contraindications. They cannot be used in coronary artery disease, cerebrovascular disease, uncontrolled hypertension, pregnancy, basilar migraine, and within 24 hours of use. These are the contraindications of triptans. So in migraine acute attack, you can use triptans, non-steroidal anti-inflammatory drugs, most likely naproxen, ergots, dihydroxyergotamine, narcotics, chlorpheniramine, or steroids also. We'll come back to it the last. So when do you take preventive treatment? When somebody has 3 or more attacks in a month, single attack leads to hospitalization or disrupts life, or patient wants treatment. What are the medications available? Medications available are beta blockers, anticonvulsants like topiramate or sodium valproate, amitriptyline or desvenlafaxine, verapamil or flunarizine. All medicine work equally almost. They work in 60% people. Migraine medication causes side effects in 30% people, which basically means you have to choose it carefully, dose it carefully. If one product does not work, try another within the same class of drug in a different class and use side effects. If somebody is obese, give topiramate. If somebody has concomitant depression, give an antidepressant. If somebody has blood pressure, give a beta blocker. So you can use the drug creativity to help people. What are the recent developments in migraine? You can use botulinum toxin for treatment of migraine. It works in 50% people with chronic migraine. Injection has to be given every 3 months. This is the paradigm. You have to block the multiple sites across the head and the occiput for the treatment of migraine. The next is you have adalimumab, anti-CGPRP molecule given every month for treatment of migraine. Again works in 50% people. Then there is new molecule you have heard of, Rajmedicon. The only problem with this molecules is that you cannot drive for 8 hours post this molecule. So in active people, this is not used generally. Finally, there is something known as status migrainosus, where the headache does not get better in 72 hours. It persists beyond 72 hours despite multiple medication. It is caused by sterile neurogenic inflammation and the treatment is steroids. So why do headache treatments fail? The diagnosis is incorrect or incomplete.
Or thus there are two types of headaches in the same person and only one is diagnosed. Factors like medication overuse, drugs causing headaches like nitrites, even amlodipine can cause headache, we must know, are not identified in a person with headache. Daily and lifestyle triggers like sleep, proper diet, timing of food are not addressed. Caffeine overuse, hormones, and physical conditions. Then patient expectations, depression, anxiety is not addressed. The dose that you use is too high or too low. So the patient either gets side effect or does not get effect. And the final dose reached is not adequate. You start with a low dose, but you fail to build the dose to proper dose, then you may not get the proper effect. So finally, take home message, listen to your patients and listen to your patients, because only patients will give you the key to their headache. Emotional factors like husband, bosses, dissatisfied life have to be addressed, like sister said earlier. Sleep disturbances, hormonal changes have to be taken care of. If you do not address the patient in totality, you will not be addressing your patient's condition. Give adequate drug, not too light, not too much, and be attentive and empathetic. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर साहब, प्लीज आपने सारी हेडेक्स की परिभाषा बता दी, उधर से भी कुछ कारण आए एज फॉर हस्बैंड। एक डॉक्टर ने हस्बैंड से पूछा तेरे को क्या हेडेक है, बोला सर धीरे बोलो भारी बैठा है। तो समझ नहीं थे। lot of times when we get an MRI done for headache, once I got an MRI done, so I said आपका ब्रेन तो बिल्कुल ठीक है। तो the lady said देखो तुम कहते हो मेरे पास दिमाग नहीं है, डॉक्टर बोल रहा है दिमाग है। हरिओम जी, डॉक्टर हरिओम जी, डॉक्टर RL गोयल जी, डॉक्टर जी शर्मा जी, डॉक्टर प्लीज डॉक्टर साहब को मोमेंट देंगे। और इस राजमेडिकॉन में ये अकेले डॉक्टर थे जिन्होंने स्वयं कहा आपकी राजमेडिकॉन को मैं लाभान्वित करूंगा। थैंक यू सो मच, सच ए वंडरफुल टॉपिक सर। डॉक्टर साहब तो आ जाए। ये सर एक छोटा सा गिफ्ट किट है, हमारे सभी जिनको कॉल किया गया वो फोटोग्राफ के लिए सर के साथ मैं हेल्प कर देता हूँ आपके। एच फॉर हस्बैंड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्पीकर। सुबह मेडिटेशन, अब headache, अब चीरा भारी. So I take the honor to welcome Dr. Gaurav Goyal ji. Dr. Gaurav Goyal. He is the Senior Director of Neurointervention Surgery at Medanta, Gurgaon, with over 20 years of experience, trained at Montreal Neurological Institute, Canada. He specializes in brain and spine vascular procedures. So, welcome you. आपका थैंक है। कल भी आप भेंट करके गए। फोर्टिस हॉस्पिटल हमारे बहुत अच्छे पार्टनर हैं, उन्होंने हमें सहयोग भी किया, स्पॉन्सर भी किया। थैंक यू देता हूँ मैं फोर्टिस। संतोष और भी हैं, थैंक यू सो मच सर। सर मैं वेदांता से, सॉरी आप वेदांता से, और आपका भी कल हमने पोस्टपोन किया था, उसके लिए आप आ गए। जितने भी स्पीकर के कल पोस्टपोन हुए उनसे क्षमा। Thank you, Rajmedicon, and I see where I started my journey from. So Dr. Chug is in the audience. Hello, sir. So, very personal note, I started my neurointervention career now almost 21-22 years back. And when I started working at Kalpana Nursing Home post my MD in Udaipur, he was the first one to put a lab there, and I think my first private case was at his center, if I'm trying to recall right. So from that to now we're gonna start something, and my job has been made very easy by Dr. Praveen Gupta, because he has gone in detail about stroke, headaches. But we're gonna talk a little bit about the sinister aspects of the headaches. So I think we spoke about these common causes and the red flags.
So not everything is migraine, and especially when the headaches do not fit into the profile, when there are papilledema, when there are abnormal signs or headache which does not stop, we also need to consider that there has to be an imaging which needs to be done. Uh, Unfortunately, we see so many times all these things missed, especially subarachnoid hemorrhage being treated as meningitis, metastasis or aneurysm being mistreated as migraine. So the other side is also there when you come out of the OPDs and when you look at the imaging parameters. But the idea is not to talk about that. The idea is to give you what is new which is happening, and subdural collection and hematoma typically is always a surgeon's perspective. You see it, you send it to a surgeon and say what needs to be done. And they operate upon it, train it. Baba had it last year. So the other side is we can do it interventionally. Like cardiologists have now started doing TAVIs or mitral valve clipping, which was considered always a vascular surgeon's prerogative. Similarly, now we can treat subdural collections also intervention, and few of the celebrities like Brazilian, not Venezuelan, Brazilian, who has undergone these operations. And similarly, we can use similar technology to treat migraines, chronic headaches, and if nothing works, middle meningeal artery embolization usually is what works. So chronic subdural collection, I don't need to tell you, it's a very common disorder, especially in elderly, and the incidence is rising. So if the estimates are correct, the neurointerventionists will be treating subdural collection much more than what they treat any other disease like. And the pathophysiology is not the bridging vein rupture which we used to think. It's an inflammation at the dural border cell layer. And that inflammation will trigger a new angiogenesis, and that leads to a lot of inflammatory markers. And this inflammation leads to the cell propagation of these collections. Remind you, we are not talking of acute subdural due to trauma. This is a chronic subdural, which is we are talking about. So once the blood starts to leak, it's a cycle which starts to form. And surgically, we are only dealing with part of the problem by draining out those collections. What we need to do is to break open this cycle. So, and the problem is we can't treat everybody surgically also. They are on blood thinners, they are usually elderlies, antiplatelets, anticoagulants, somebody has a heart stent. So multiple issues are there, and then it becomes easy because for intervention, all this is a good thing. If the patient is on antiplatelets and anticoagulants, we don't need to worry about it. And it's a very simple procedure like doing a diagnostic angiogram. And we go in, we block the artery, and that leads to resorption. So I'm going to skip these papers in interest of time, but these are like level 1A evidence now that we can block this artery. You go inside, these are the external carotid artery branches, so absolutely safe to do, very cost effective. So overall cost is something like 1 lakh rupees even in a private hospital setup. You block these arteries and you can see on follow-up CT scans the hematoma or collection will resolve. So pre-op and then 3 months without any need for burhole, without any need for surgery. And we have multiple patients like this. So we started doing this almost 2 years back now, and now we have data of almost 150 patients. And most of the times, if the patient is not symptomatic, only headaches, you don't need to do anything. But if there is a focal neurological deficit, then you need to drain this out and also block the artery so that these hematomas do not recur again. So again, multiple cases around the same time. So this is even with the surgical side because the patient had a recurrence. The other causes of headache, which Dr. Praveen just mentioned, was the IIH or the benign idiopathic intracranial hypertension. And again, typically the options are Dimox, optic nerve fenestration, VP shunt, peritoneal shunt. So this is an anesthesiologist, multiple headaches, access to all medications and therapies, high opening pressure of 30 centimeters, started on Dimox, then plateaued, then birth, which is typically the thing.
multiple hospital admissions, and nothing was working out for her. She was losing vision. So typically when you do an MRI, it's right that if you are not experienced enough, you may not see any findings. So you may think it's normal. But if you look closely, it's always an empty cell adversica. There is always some pressure on the eye. Optic nerves are tortuous. And if you do an MRI on these patients, you may be able to identify stenosis of the transverse sinus. Yeah. So we can see this stenosis of the transverse sinus. And what we do is DSA. We again look for these blockages, and we can do what we call as the pressure gradient measure, because these stenosis can also be arachnoid gland lesion. So we need to measure rightly. So once we see the pressure difference, pre and post, so the post is 21, the pre is 30. So any difference of more than 6 is significant. Here it is 9. So we can do stenting. Again, it's an elective procedure, and immediately after that, the gradient drops down to 1. So you know now the brain is able to flow, the pressure gets reduced, pain score is improved, the patient is back to work. So again, a simpler thing, which now we are seeing a lot of patients in our practice. In fact, I'm supposed to do one again tomorrow. For these patients who are being now referred from all across the country, for which we always had an invasive options. Now we have these non-invasive or minimally invasive options. So another patient we just want to look through it. Similar sort of thing, high gradient of 80. So pressure gradient is very important before you decide to stent these patients, because otherwise your outcomes will not be good. So again, we have to consider the criteria.